सो व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, वहाँ से थोड़ा सा जो है हम पार्टिकल के मोशन के बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। यूजुअली क्या होता है कि आप न्यूटनियन मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, या फिर आप जो है लेग्रांजियन को ऑब्टेन करके इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन करते हैं, फिर फर्दर स्टडीज़ होता है। लेकिन अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स डिराइव किया जा सकता है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इट्स मोशन। सम ऑफ यू मे ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज कंक्लूजन्स। एक बार मैं बता देता हूँ एज क्विकली एज पॉसिबल। Let's suppose I have this kind of graphical representation. On the x-axis you have displacement, ठीक है, and the y-axis you have the potential with respect to displacement, ठीक है। This is a potential which depends upon space, you know. Vx is a potential energy which is a function of displacement और फंक्शन ऑफ पोजीशन जो भी है, ठीक है। एंड इट हैज सम सॉर्ट ऑफ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेट्स सपोज मैं ग्राफ ले लेता हूँ आपको यहाँ पे, ऑलराइट। इफ आई टेक अ ग्राफ, एक सेकेंड, okay, if I take this kind of a graph, it could be anything. Now this kind of a graph gives us an idea about what is going to be the nature of its motion. So you usually know that there is a relationship that exists between the particle and the potential. So if the potential is given by this, the particle experiences a force which is basically given by F is equal to minus del V. Okay, so from here you can get an idea कि पार्टिकल के ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल के ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा, दैट कैन बी इजीली फाउंड बाय लुकिंग एट द ग्रेडियंट। सो द ग्रेडियंट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट कि बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे ये स्लोप क्या है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ v। अगर हम fx फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज फॉर 1D मोशन के लिए, तो सिंपली स्पीकिंग योर x will simply give you minus dv upon dx, right? So which is nothing but the slope of vx, and by looking at the slope of vx we can find out that there are three different regions or at least two possibilities here जहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या पार्टिकल जो है if it is at that particular point it is not going to experience any force. So can you tell me that which 2 points in this graph are those 2 points where the particle is not going to experience a force? If minus dv upon dx is equal to 0, then fx is equal to 0, right? No force. ग्राफ देख करके आप कौन सा पॉइंट बोल सकते हो जहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा पार्टिकल? Maxima and minima. So let's suppose that this is the minima, and let's suppose that this is the maxima, and let's suppose that this is x1 and this is x2. So x1 and x2 are associated with zero slope. Okay, so this is associated with zero slope of the potential. So this is dv upon dx is equal to 0. So this is also associated with dv upon dx is equal to 0. So x1 and x2 are associated with zero force. That is f is equal to minus dv upon dx is equal to 0. All right. Now it is interesting. So points like these are known as
Points like these are known as points of equilibrium. Points like these are known as points of equilibrium. However, these points of equilibrium can be further divided into two important classifications. Can you tell me? So you have stable equilibrium points, and then you have unstable equilibrium. So स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, बट जहाँ से अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया जाए तो इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ट्रू, बट इफ इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स position, then it will never come back to its original location. So stable equilibrium here is represented by which point? x1. The unstable equilibrium point is represented by x2. So if you look at this, if the particle experiences any kind of a force here, okay, so basically let's suppose अगर particle अगर यहाँ पे है तो it doesn't experience a force, but the moment the particle comes here, it experiences a force which is directed towards the point, है ना? And the particle is displaced to this point, it experiences force which is directed here. ये आपको मालूम है ना, या मेरे को करके दिखाना पड़ेगा? पता है ना आपको ये the direction of the force, or should I show it to you how it is? अच्छा चलो दिखा देता हूँ. Let's suppose that this is a point and this is a particular point, and this point is given as x1 plus, ठीक है, and this point is x1 minus. तो अगर हम पार्टिकल को जो है पार्टिकल at f of x is equal to minus dv of, so basically f at x1 is equal to minus dv of dx at x1 is simply equal to 0. x1 लोकेशन में जो है there is no force. However, अगर हम देखेंगे let's suppose f at x1 plus, ठीक है, x1 plus में क्या फोर्स आ रहा है, this is equal to minus dv upon dx at x1 plus. तो x1 plus में फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? x1 plus पे ओके ये जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, ये जो स्लोप है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा. वेरी गुड. सो ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये जो स्लोप है यहाँ पे, ये स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप. लेकिन अगर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोर्स जो है नेगेटिव है. फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये है इट इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, acting towards negative x-axis. So it is acting to bring the particle back to its original point. उसी तरह से मैं अगर फोर्स F is equal to x1 minus पे देखूँ, तो this is equal to minus dv upon dx and x1 minus is equal to, यहाँ पे जो fx कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है पोटेंशियल का, वो स्लोप जो है नेगेटिव है. दैट स्लोप इज नेगेटिव. हाउएवर नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव. सो देयरफॉर this is acting towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये बेसिकली तुम जहाँ पे भी इसको फोर्स डालो, पार्टिकल को जहाँ पे भी डिस्प्लेस करो, अगर राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल हैज़ अ टेंडेंसी टू कम बैक टू x1.
अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिड्यूस ये करोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू x1. सो देयर फॉर द पार्टिकल इज फॉर एवर स्टक इन दिस रीजन. पार्टिकल जो है हमेशा यहीं पर स्टक हो जाता है. सो दिस इज देयर फॉर अ पॉइंट नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पार्टिकल मैक्सिमा पे है तो यहाँ पे तो फोर्स उसका जीरो है, सिमिलरली दिखा सकते हैं. लेकिन अगर पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है तो पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन. वेरी गुड. और अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स negative direction. That means if you displace the particle from this point, hence the particle will never really come back to its original location x2. Therefore this is known as a point of unstable equilibrium. तो यहाँ पे भी क्या है, f of x2 is equal to minus dv upon dx at x2 is equal to 0. but अगर हम second order derivative देखेंगे, d2v upon dx2 at x dx at x2, then this will come out to be positive. while यहाँ पे अगर हम second order derivative देखेंगे, d2v upon dx at x1, and this will come out to be a negative. So this simplifies, basically tells us that there's some kind of a local minima, which is what a stable equilibrium point is, and a local maxima, which is a unstable equilibrium point is. So maxima and this is minimum. Okay. Now let us look at what happens when the motion is indeed restricted to the stable equilibrium point. अगर stable equilibrium point पे motion restricted होता है, then it executes some kind of an oscillation. पार्टिकल को अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस आता है, लेकिन वापस आते आते उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है, फिर यहाँ से वापस आता है, ऐसे करके इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ एन ऑसिलेशन ओवर एंड ओवर अगेन. What is the nature of that oscillation we want to find out? Okay, so what are the oscillations that correspond about a stable equilibrium point? ये सॉरी या यू आर करेक्ट, मैंने गलत लिख दिया. ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा. या थैंक यू. सो ऑसिलेशंस अबाउट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. Now what happens is that oscillations, बल्कि इनफैक्ट मैं कहता हूँ small oscillations about a stable equilibrium point. So अगर हम मोशन को स्टडी करेंगे with respect to only the potential जहाँ पे एक मिनिमा है, then if we displace it from a very very small angles, we can show that the nature of oscillations that happens is basically a simple harmonic oscillation. ठीक है. So अगर आपके पास इस तरह का potential है, okay, let's suppose यही है, some kind of potential is there, and if you look at the nature of its motion in a very small region, let's suppose आप यहाँ पे यहीं पे study करते हैं whatever is the nature of motion here. Okay, so let's suppose that this is Vx and the lowest minima point refers to x0 या something like that. Okay, तो अगर आपके पास Vx है तो Vx is some kind of a mathematical function. All right, it has some kind of a mathematical relationship in terms of x, and if Vx is indeed some kind of a, which it has to be, that it is some kind of a continuous, it is a very simple function, in that case I can expand Vx into an infinite series. I can do a Taylor series expansion of Vx at a particular point around the equilibrium point, let's suppose x0. So I can write that Vx is equal to Vx0 plus
x minus x naught del v upon del x at x naught plus half x minus x naught square del to v upon del x2 at x naught plus on and on. ठीक है, मैं अगर एक सिंपल एक्सपेंशन करूँगा ऑफ दिस मैथमेटिकल फंक्शन वी एक्स अराउंड अ पॉइंट ऑफ एक्स नॉट, देन आई कैन राइट इट इन दिस पर्टिकुलर टर्म्स. फर्स्ट आपका आएगा वी एक्स नॉट, सेकेंड आपका आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड आपका आएगा second order derivative, on and on and on. Now because I am doing an expansion with respect to the point x naught, here del v upon del x at x naught कितना होगा? What is this? This is equal to 0. Then this expansion simply becomes vx is equal to v of x naught plus half of x minus x naught square del 2v upon del x square at x naught. अब यहाँ पे आपने हमने जब लेग्रांजियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करी थी तो आपने देखा होगा कि पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम रेफरेंस कोई भी चूज़ कर सकते हैं. कभी हमने पेंडुलम का प्रॉब्लम किया होगा तो कभी ग्राउंड का पोटेंशियल रेफरेंस ज़ीरो लिया होगा, कभी सीलिंग का लिया होगा. So the reference line that you choose while calculating potential does not matter because ultimately you are calculating potential energy here. This is a potential energy expression. So when you calculate potential energy expression, the reference line that you choose as 0, it depends upon you. So यहाँ पे ये जो line है, this is basically giving an idea about what is the potential energy at x naught. ठीक है? Because this x-axis represents potential energy. What is this vx naught? Now we can construct our system in such a manner that vx naught को हम 0 मान के चल सकते हैं. So we can choose some kind of a reference so that vx naught is 0. We can choose a reference such that vx naught is equal to 0. कभी आप ground पे लेते हैं, कभी आप ceiling को लेते हैं, whatever you take. Ultimately the potential energy variation therefore becomes this is equal to half x minus this is equal to half x minus x naught square and del 2v upon dx square x naught. तो यहाँ पे we can choose not only vx naught to be 0, we can also choose, let's suppose what you can say as x naught to be also equal to 0 अगर मैं चाहूँ तो. But लिखने की ज़रूरत नहीं है, there's no need. You can choose reference to be 0. So therefore here here what I'll say is here if I write d2v upon dx2, sorry, not a partial order derivative, d2v upon dx2 at x is equal to x naught is equal to some kind of a, let's suppose, constant. Okay, ऐसे अगर करूँगा then I can write this expression as, then I can say that vx is equal to half k x minus x naught square. Now this is a potential which is very, very familiar to you. You have seen potentials like this over and over again. Many times you have seen it. Can you tell me what kind of a system is has a potential of this form? किस तरह का सिस्टम का इस तरह का पोटेंशियल हो सकता है? हाँ, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं इन जनरल? उस तरह के सिस्टम्स को क्या कहते हैं फिजिक्स में जो इस तरह का पैराबोलिक पोटेंशियल होता है जिनका? Harmonic oscillators. Harmonic oscillators are very important category of systems that execute a very specific kind of a motion. We can actually find out what that nature of the motion is. So यहाँ पे if I say that force, if I am interested in finding out the force, fx is nothing but minus dv upon dx. So this is nothing but dv upon dx क्या होगा? 2 cancel minus k x minus x naught. fx की जगह पे अगर हम लिख देते some kind of a mass times acceleration into x axis, so this is equal to minus k x minus x naught. So this is nothing but ax is equal to minus k upon m x minus x naught. तो जहाँ पे भी that is acceleration is directly proportional to the displacement, so that kind of a systems are known as
harmonic oscillators. So whenever the acceleration is directly proportional to displacement and directed in the opposite axis, negative sign है यहाँ पे, if you notice negative sign है यहाँ पे, so it creates a very specific kind of a motion which you know as SHM, simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a very simple kind of क्या बोलते हैं, oscillations which is sinusoidal in nature. ठीक है, ऑसिलेशंस का जो है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वेवलेंथ कांस्टेंट है, साइनोसाइडल वेरिएशन. तो इसका सोल्यूशन जो मैं लिख सकता हूँ, तो हाँ मैं मैग्नीट्यूड के मैं लिखा बताया तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल भी तो दिया दैट, बट डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर. मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में. कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है फोर्स उसका ऑपोजिट ही लगेगा. तो उसका जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल. xt is some kind of a cosine function or sine function, sine root k upon m omega t plus phi some constant. Okay, so you will end up getting some kind of a solution of this manner, a sinusoidal variation. All right. सो एज यू कैन सी, हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लिया है. हमने ये नहीं बोला कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है या पेंडुलम है, क्या है. हमने एक रैंडम पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को लिया है एंड आई हैव नॉट इवन स्पेसिफाइड कि ये पोटेंशियल किसका है. ठीक है, मैंने स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि ये पोटेंशियल किसका है. आई एम जस्ट सेइंग दैट पोटेंशियल इज सच दैट देयर इज़ अ मिनिमा, एंड इफ देयर इज़ अ मिनिमा देन आई एम एक्सपैंडिंग दैट पोटेंशियल अराउंड दैट मिनिमा. और अगर हम यहाँ पे, मैंने एक चीज़ नोट नहीं किया है, इफ़ आई ओनली कंसिडर मोशन विच इज़ स्मॉल ऑसिलेशंस. ठीक है, यहाँ पे मुझे स्मॉल ऑसिलेशंस का एक वो लेना पड़ेगा, मतलब मोशन जो है वो बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट्स में हो रहा है. तो इसलिए आई कैन इग्नोर दीज टर्म्स. जो हायर ऑर्डर टर्म्स है आई कैन इग्नोर, वी कैन इग्नोर हायर ऑर्डर टर्म्स. We can ignore higher order terms if displacement is small. अगर displacement small है तो हम higher order terms को ignore कर सकते हैं. And in that kind of a situation, we can represent the potential as some kind of a potential of a harmonic oscillator, the motion जिसका nature होगा sinusoidal. That's it. तो कोई भी पोटेंशियल हो किसी भी सिस्टम का, अगर एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो फॉर सफिशिएंटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स दैट सिस्टम विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस. इज इट क्लियर? या लेट अस टेक एन एग्जांपल. जो हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, लेकिन फॉर सफिशिएंटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स इट बिहेव्स एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. कोई मुझे बता सकता है ऐसा एग्जाम्पल? या पेंडुलम इज अ गुड एग्जाम्पल. पेंडुलम के अलावा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? पेंडुलम के अलावा कोई एग्जाम्पल तुम्हें मालूम है? ओके, तो मैं अगर एक पेंडुलम के मोशन को देखता हूँ, ठीक है, तो दिस इज एल एंड लेट्स सपोज दिस इज थीटा, देन दिस बिकम्स एल कॉस थीटा. तो अगर मैं पेंडुलम के मोशन को देखता हूँ, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम इज बेसिकली गिवन बाय लेट्स सपोज mgh, है ना. mgh को कैसे लिख सकते हैं? mgh इज इक्वल टू L माइनस एल कॉस थीटा लिख सकते कि नहीं? So the potential is related to its displacement, angular displacement, mgl 1 minus cos theta.
Is it a fair enough graph? Is it a proper graph? Sorry, is it a proper relationship? इसका वेरिएशन क्या होगा? लेट्स सपोज 1 माइनस कॉस एक्स को स्टडी करते हैं हम, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स को स्टडी करते हैं क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ना. 1 माइनस कॉस एक्स को अगर हम देखें यहाँ पे, कैन यू सी दिस? दिस इज द ग्राफ दैट यू हैव. रेंज को चेंज कर सकते हैं क्या? ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ फॉर अ पेंडुलम. ओके, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा दैट यहाँ पे इट दिस पॉइंट सिंपली रिप्रेजेंट्स द पेंडुलम अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ अ 180 डिग्री रोटेशन, है ना. तो पेंडुलम जो है इस रीजन में है, ये आपका मिनिमा है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो दिस स्मॉल एंगल्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना. This small angles can be approximated by a harmonic oscillator, and for small angles, pendulum for small angles, pendulum behaves as a harmonic oscillator. कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे cos थीटा का हम cos थीटा को स्मॉल एंगल्स में कितना लेंगे? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, है ना. सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल थीटा स्क्वायर अपॉन 2. तो ये आपका हो गया हाफ, ये क्या आएगा यहाँ पे, एम एल स्क्वायर जी अपॉन एल थीटा स्क्वायर. तो हाफ एम एल स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पेंडुलम का. जी अपॉन एल क्या है? ओमेगा स्क्वायर है थीटा स्क्वायर. तो एज यू कैन सी दिस इज हाफ के थीटा स्क्वायर. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम approximates to a parabola for very small angles, and therefore it behaves as a harmonic oscillator for very small angles. But after some time, for larger displacements, it does not behave as a harmonic oscillator anymore. This is clear, beta? Okay. Now इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल आस्क यू अबाउट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड पॉइंट्स एंड वगैरह वगैरह. तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन लेट मी सी इफ यू कैन परफॉर्म, इफ यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ओके, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. अगर आपके पास एक पोटेंशियल है, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पोटेंशियल है ऑफ द फॉर्म वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स टू द पावर एल होल स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर एल टू द पावर 4. ओके, वी एक्स माइनस ए एक्स टू द पावर एल होल स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर एल टू द पावर 4. तो द क्वेश्चन इज find the frequency of angular accelerations
for SHM around the stable point. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने बताया आपको हाउ टू फाइंड आउट के. इफ़ यू कैन फाइंड आउट के, देन फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ओमेगा. ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम. So that means omega is equal to k is nothing but d2v upon dx2 at x naught 1 upon m root over. Okay, ये आपका है angular accelerations का angular frequency. So I am giving you a potential. Can you find out what is the frequency of angular accelerations for SHM around a stable point? कर पाओगे? Will you be able to do this? Okay, then tell me the answer. Okay, what is the angular frequency of angular oscillations for SHM around a stable point? Stable equilibrium point is under root a by 2b या a l square by 2b. And frequency is? Yes, very good, very good. Yeah, it's a very simple equation, simple problem as he has given the answer. So dv upon dx को अगर हम zero करेंगे तो we will find out what are the equilibrium points. So minus a 2x upon l square plus b 4x cube upon l to the power 4 is equal to 0, or so 2ax upon l square is equal to 4bx cube upon l to the power 4, which simply gives us 2ax l square is equal to 4bx cube. तो यहाँ पे जो है x is equal to 0 का एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैंसलिंग इट आउट. So this is 2al square is equal to 4bx square. So 1 is an x equal to 0 point. So ये यहाँ पे 2 हो गया. And then finally we get x is equal to al square upon 2b root over al square upon 2b root over plus minus. So these are your
equilibrium points. Okay, this is one equilibrium point, this is another equilibrium point. Now the question is it a stable equilibrium or an unstable equilibrium? अगर स्टेबल होगा तो उसके अराउंड तो SHM होगा, सॉरी अनस्टेबल होगा तो उसे कह रहा हूँ SHM होगा नहीं. तो टू फाइंड वेदर नॉट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, टू फाइंड वेदर नॉट वेल हम क्या करेंगे, स्टेबल या अनस्टेबल फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव, सो d2v अपॉन dx2. सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं क्या है. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस 2a अपॉन एल स्क्वायर प्लस 12b x square upon L to the power 4 at x is equal to 0. This becomes minus 2a upon L square. तो ये हो गया आपका नेगेटिव. नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इट्स एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर द अदर पॉइंट, d2v upon dx2 at x is equal to plus minus root over al square upon 2b. So this is equal to minus 2a upon l square plus 12bx square upon l to the power 4 at x is equal to plus minus root over al square upon 2b. तो ये आपका हो जाएगा minus 2a upon l square plus 12b upon l to the power 4. ये हो जाएगा al square upon 2p है ना. So this comes out to be l square हो जाएगा 2, b cancel, 2 6. So this is equal to minus 2a upon l square plus 6a upon l square is equal to 6a minus 2a, 4a upon l square. Okay, so this is positive, and because this is positive, this is a stable equilibrium. So therefore SHMs can only happen around this particular point. So SHM can happen, SHM can happen for small displacements around this point only, और अराउंड दीज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे 2 मिनिमा है. सो क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम. ओके, हमने जो इक्वेशन लिखा था स्टार्टिंग में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम. तो के अपॉन एम में के क्या है, के इज इक्वल टू, हमने क्या कांस्टेंट माना था यहाँ पे, हमने माना था के इज इक्वल टू d2v अपॉन dx2 अपॉन फॉर x इज इक्वल x नॉट. सो d2v अपॉन dx2 at x is equal to plus minus root over al square upon 2b. So this is nothing but 4a upon l square. Okay, so ये आपका हो गया 1 upon m 4a upon l square, और ओमेगा is equal to 4a upon ml square का रूट ओवर. ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. दिस इज योर आंसर. ठीक है, सब ने कर लिया इसको. ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, बिकॉज द मेथडोलॉजी इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस. ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर. लेट मी डू अनदर, लेट मी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अनदर थिंग. ओके, now whenever these oscillations are happening with respect to displacements around some kind of an stable equilibrium point, तो हम बाकी सारे physical quantities का भी relationship find out कर सकते हैं. So for example, we can also talk about relationships that exists, relation between energy
and time period of oscillation. matlab how is the, for the oscillations that are happening, how is the energies relevant to the time period oscillations. Now what we can do is we can do this not necessarily for oscillations for small angles, but we can also do it for oscillations for larger angles. मतलब अगर एंगल बड़ा भी है, अगर SHM नहीं भी है, उस केस में भी हम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं. So we can write not necessarily RILY for small displacements. So not necessarily SHM. मतलब अगर किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड ऑसिलेशंस हो रहा है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में तो वो SHM होगा, लेकिन अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में SHM होगा तो हम टाइम पीरियड तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना वहाँ पे. तो T इज इक्वल टू 2π/ω हो गया. ठीक है, T इज इक्वल टू 2π/ω, और वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन अगर आप स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं मान के चलते हो तो आप क्या कह सकते हो इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. So the total energy is given by the kinetic energy plus the potential energy. The kinetic energy you know as half, mv square, and the potential energy is some kind of an expression Vx. So ऐसे situation में half mv square is equal to E minus V of x. The total energy is a constant, Vx is a function of something, and V square is equal to 2/m E minus V of x, or V is equal to 2/m E minus V of x. So ऐसे situation में what is V? V is nothing but dx/dt. So dx/dt is root over 2/m E minus V of x. So I can say that I can bring the function that is only dependent on x on one hand side. So I can say that this is dx root over 2/m E minus Vx is equal to dt on this side. Okay, if dt is on this side, then I can integrate it. I simply get the time period is basically equal to root over m/2 integration of dx with respect to E minus Vx root over. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज फाइन. अगर आपका कोई भी जनरल एक्सप्रेशन होगा Vx का, then the time period of an oscillation or the time period of the motion from let's suppose x अगर 0 से लेकर के x तक जाता है या -x से लेकर के +x तक जाता है, can be given in this particular manner. Is this okay? This is the relationship between the what you can say as energy and the time. Okay, between energy and time. मतलब सिस्टम का एनर्जी कितना है और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इट टेक्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन ऑसिलेशंस फॉर हैपनिंग. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट एनर्जी. अगर एनर्जी जो है कांस्टेंट रहता है, फॉर कांस्टेंट एनर्जी अगर हम करें तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट T इज इक्वल टू रूट ओवर m/2. अगर हम E को बाहर लेके आते हैं, e टू द पावर -12 इंटीग्रेशन ऑफ dx root over 1 minus V/E. Okay, so this is basically equal to root over m/2 e to the power -12 integration of dx upon root over 1 minus, let's suppose yx. Okay, yx is function of yx is equal to Vx upon capital E. Now what is V? V is potential energy. It's energy but it's potential energy. What is E? E is total energy. ठीक है, total energy is the sum of potential energy and the
काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये एक तरीके से एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी हो गया। सो दिस वाई इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारा टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो वाई अपॉन वी अपॉन ई का जो रेशियो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? एट ईच पॉइंट इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, यस और नो? अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और और टोटल एनर्जी जो है आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो रेशियो है, ये रेशियो जो है इट इज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एक्स। सो इट इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ डायमेंशनलेस नंबर दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी डायमेंशनलेस नंबर दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन एक्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से हियर इज दैट, or we can say that t is directly proportional to e to the power minus half. Okay, so the time period is directly proportional to e to the power minus half and it's also directly proportional to dx. एक तरीके से it is also proportional to dx here, ठीक है, क्योंकि नीचे तो 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ y है, ठीक है। अब y जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो है, एनर्जी का रेशियो है, बचा क्या? आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एनर्जी इन ए गिवन पोटेंशियल। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन, अगर आपके पास है वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड और टोटल एनर्जी? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये आपको मालूम ही होना चाहिए वैसे तो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर दिस काइंड ऑफ अ पोटेंशियल? क्या रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और एनर्जी का? नहीं पता? SHM के लिए टोटल एनर्जी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है? कोई रिलेशनशिप नहीं होता यार, भूल गए क्या? देयर इज नो डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड ऑन SHM energy. I can demonstrate that from here also. So if I say that okay, this is this, then Vx upon capital E is equal to half kx square upon capital E. Okay, तो ये आपका बन गया Yx is equal to के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल ई। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y कैपिटल ई अपॉन के। तो x आपका बन गया रूट ओवर 2y कैपिटल ई अपॉन के। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था? टाइम पीरियड हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन दिस एज वेल एज टाइम पीरियड हैज़ अ डिपेंडेंस ऑन dx। तो अगर मैं dx फाइंड आउट करता हूँ और dx इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन dx विल हैव अ रिलेशनशिप विथ e टू द पावर हाफ, है कि नहीं? बिकॉज दिस इज इक्वल टू 2y अपॉन के हाफ एंड e टू द पावर हाफ। तो dx विल हैव अ रिलेशनशिप ऑफ e टू द पावर हाफ हियर, यस और नो? Okay, so combining these two, combining this 1 and 2, combining 1 and 2, what we get? 1 and 2. Time period is directly proportional to e to the power minus half and dx, ठीक है? तो it is directly proportional to e to the power minus half and dx is directly proportional to e to the power half. So this is equal to e to the power 0. So time period is directly proportional to e to the power 0, मतलब there is no dependence.
no dependence of energy, total energy on time period. Can you see this? There is no dependence of total energy on the time period. Can you see what I did? मैंने सिर्फ एक तो ये पहले से मैंने ऑप्टेन करके रखा हुआ, दूसरा मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि dx के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है और मैं सिर्फ y को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके dx फाइंड आउट करता हूँ. तो जो भी है आई कंबाइन बोथ ऑफ देम, एंड व्हेन आई कंबाइन बोथ ऑफ देम वॉट एवर द आंसर कम्स दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एनर्जी. ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ. फाइंड आउट द सेम फॉर वी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 6. अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ठीक है बेटा, कर लोगे ये, एक बार ट्राई कर लोगे घर पे क्या रिलेशनशिप है एनर्जी और टाइम पीरियड का फॉर दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल. ऑलराइट.